हेलो फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, बहुत सारे लाइक्स दिए हैं, वेरी हैप्पी। और अगेन वेलकम टू अवर चैनल बायो वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, क्या पढ़ा हमने कि ट्रांसवर्स सेक्शन अंतर का कैसे होता है, उसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा। उसके बाद एंड्रोशियम के क्या पार्ट्स है, उसका क्या फंक्शनिंग है, कैसे वर्क करता है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना। तो ये लेक्चर में हम आगे वाला पार्ट देखते हैं। तो टॉपिक इट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरो means it is the microspores or it is called as pollen grains. And genesis meaning is the formation. Microsporogenesis, it is the process of formation of माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, वह प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वेयर डज इट ऑकर्स? इट ऑकर्स इन द पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया और द पोलन सैक, ये स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा है टीएस ऑफ एंथर में, जो सेंट्रल पार्ट था जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यूज थे। तो स्पोरेंजिया और पोलन सैक में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने वाला है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? हम लोगों ने क्या देखा कि आर्चिस्पोरियल सेल्स जो है, यह कैसे है? डिप्लॉयड। दिस आर्चिस्पोरियल सेल्स, it undergoes the process of mitosis, or this archisporial cells, they directly act as a sporogenous tissues. These sporogenous tissues which is also diploid. These sporogenous tissue, they are called as a microspore mother cell. These are microspore mother cell, these are also diploid, or it is written as MMC, microspore mother cell. This diploid microspore mother cell, it undergoes a process of meiosis to form 4 haploid cells, and these 4 haploid cells, they are called as microspores, or it is called as a pollen grain. As the number of pollen grain or the microspores produced, they are 4 in number, it is called as a tetrad of microspore. It is called as a tetrad of microspore. Now, here the pollen grain is produced. So, what is the structure of pollen grain? How does it looks? So, next topic, it is about the structure of pollen grain. So let's draw the diagram of pollen grain. The pollen grain, you are observing that there are 2 layers, outer layer and inner layer. So this is the simple diagram representing the structure of pollen grain. This is the outer layer, that is exine.
The inner layer is the entine, the exine and entine, collectively called as a sporoderm. It is the single nucleus and it is a cytoplasm, and this structure, it is the germ pore. So this diagram, it is representing the structure of pollen grain. Let's understand it. The pollen grain in diagram, we can see that it consists of two layers, outer layer and inner layer. This outer layer is the exine and inner layer is the entine. This exine and entine collectively called as a sporoderm. So let's start. Pollen grain, what is the structure or what is the nature of pollen grain? Here we can see that the microspore mother cell which is diploid, it undergoes a process of meiosis and it leads to the formation of 4 haploid cell, or it is represented by N, means the pollen grains are haploid. So pollen grain, it is a haploid structure which is represented by N. As it does not move anywhere, it is a non-motile cells. So pollen grain is a haploid structure, it is a non-motile cell. This pollen grain, it consists of 2 layers. डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं इसमें 2 लेयर है, एक लेयर जो है आउटर और एक जो है इनर. आउटर लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्साइन, एंड इनर लेयर इट इज कॉल्ड एज एंटाइन. This exine and entine collectively called as a sporoderm. Exine और entine को हम लोग collectively क्या बोल रहे हैं, sporoderm. अब जान लेते हैं exine के बारे में डिटेल. Exine देख रहे हैं कि आउटर लेयर है, उसके बाद थिक है, and the component it is made up of sporopollenin. If you remember, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये वर्ड देखा है कि sporopollenin it is secreted by the innermost layer of the anther wall, that is the tapetum. So sporopollenin, it is an important component of the exine. Now this is one structure of the pollen grain in which the exine is smooth. So exine, it may be smooth in wind pollinated plant. wind pollinated plant में हम लोग देखेंगे कि एक्साइन जो है कैसे है, स्मूथ है, और इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में एक्साइन जो है रफ है, रफ एक्साइन. लेट्स ड्रॉ द सिंपल डायग्राम. So in wind pollinated plant the exine is smooth and in insect pollinated plant the exine is rough. In a diagram we are seeing that the exine is interrupted at some point. These interruptions, it is called as a germ pores. Germ pores, it is an interruptions in exine. And germ pore, it helps in the formation of pollen tube during pollen grain germination. जब pollen grain germination होगा तो उस टाइम pollen tube जहां से इमर्ज होने वाली है वह है germ pore. So germ pore in monocot, monocot में सिंगल germ pore present होता है. There is a single germ pore is present in monocot and it is called as uniporate. While in a dicot plant there are 3 germ pores. Dicot में हम लोग देखेंगे कि 3 germ pores है और उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ट्राइपोरेट.
So depending on the number of germ pores, the monocot are the uniporate and dicots are the triporate. So it is all about the exine and the germ pore. So moving towards the intine. Intine, it is the innermost layer and it protects the cytoplasm, and intine, it is composed of pectin and cellulose. इसमें जो कंपोजिशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स है वह है पेक्टिन और सेल्यूलोज। और यहाँ डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि इंटाइन ने किसको प्रोटेक्ट किया है? द इनर मटेरियल, इट इज द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। So cytoplasm and nucleus, they are protected by the intine. So it is all about the structure of pollen grain and the microsporogenesis. So thank you for watching this video. Hope so you are understanding the topic, understanding all videos, understanding my lectures. So thank you for subscribing the BioWorld channel. Thank you so much.